Hello viewers, welcome back on my YouTube channel Ayaz English Grammar. So today I have brought for you an interesting video on 50 English idioms with Urdu meaning. ये हमारी सीरीज है जिसमें हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो बेसिक idioms हैं वो हम सीखेंगे। उसके बाद हम एडवांस जो idioms हैं उनको सीखेंगे and start idioms and usage. Break the ice. The idiom is break the ice. The meaning खामोशी तोड़ना। अगर कोई बंदा खामोश बैठा है और if you want someone to talk, so you can say that break the ice. It doesn't mean that you have to break the ice that we use for water. No, no, no. It has some hidden meaning, right? Break the ice. Meaning to start a conversation. So here's an example. He broke the ice by telling a joke. So guys, break the ice, खामोशी तोड़ना, meaning as well as an example. I hope you understood it. Let's move towards another idiom. A piece of cake. A piece of cake doesn't mean के एक केक का टुकड़ा। बेसिकली देखा जाए तो हमें ये मीनिंग मिलती है। But according to idiomatic expression, according to idioms, हमारी जो मीनिंग है वो है बहुत आसान, which means very easy. Example, this homework is a piece of cake. यानी ये homework बहुत ही आसान है. So piece of cake means very easy. Under the weather. Now you can understand under की मीनिंग क्या है, weather की क्या है. जब हम इनको कनेक्ट करेंगे और एक इडियम बनाएंगे तो उसकी मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगी। अंडर द वेदर, तबीयत खराब होना, मीनिंग फीलिंग इल और सिक। एग्जाम्पल, शी इज अंडर द वेदर टुडे। शी इज अंडर द वेदर टुडे, यानी आज उसकी तबीयत खराब है। शी इज नॉट फीलिंग वेल, शी इज फीलिंग इल, राइट। अंडर द वेदर मीन्स तबीयत खराब होना। हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सही बात करना, बिल्कुल दुरुस्त बात करना। हिट द नेल ऑन द हेड, मीनिंग से एग्जैक्टली द राइट थिंग। एग्जाम्पल, you hit the nail on the head with your idea. You hit the nail on the head with your idea. Hit the nail, say exactly the right thing. Once in a blue moon. Once in a blue moon means kabhi kabhi या kabhi kabhar. Very rarely. Example, he visits us once in a blue moon. यानी वो कभी कभी हमारे यहाँ या हमारे पास घूमने आता है, चक्कर लगाता है, विजिट करता है। Once in a blue moon. Let the cat out of the bag. Let the cat out of the bag. राज, किसी राज को खोलना, किसी राज को जाहिर करना, ठीक है, किसी का राज फाश करना। Reveal a secret. Example, he let the cat out of the bag by mistake. Means he revealed a secret but by mistake. Let the cat out of the bag. Speak of the devil. शैतान का जिक्र और वो हाजिर। कहते ना शैतान का जिक्र किया और वो हाजिर हो गया या वो आ गया। Speak of the devil, meaning when the person you're talking about appears. When you're talking about a person, suddenly he appears. Example, speak of the devil, here comes Ali. Speak of the devil.
burn the midnight oil, burn the midnight oil। रात देर तक काम करना, या हम इसकी मीनिंग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि रात देर तक मेहनत करना। कहते हैं ना, माई एग्जाम्स आर ड्राइंग नियर, आई एम बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। मेरे इम्तिहान करीब है, मैं सही रात मेहनत करता हूँ, या देर तक मेहनत करता हूँ, या काम करता हूँ, या स्टडी करता हूँ। वर्क लेट इन टू द नाइट, ओके, बर्न द मिडनाइट ऑयल। She burnt the midnight oil for the exam. She burnt the midnight oil for the exam. रात देर तक काम करना। Cry over spilt milk. Cry over spilt milk। यानी कभी कभी कोई ऐसा काम हो जाता है जिसका हमें पछतावा तो होता है, लेकिन वो चीज़ वापस नहीं आ सकती। ठीक है। किराए ओवर द स्पिल्ट मिल्क की अगर हम एक मीनिंग निकालें, तो उसका मतलब ये है कि जो दूध गिर गया, अब उस पे रोना क्या, क्योंकि उसको हम उठा तो नहीं सकते, वो तो सारा जज़ब हो जाएगा जमीन में, राइट। सो डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ट मीन्स वट एवर हैज हैपेंड, सो डोंट क्राई ऑन दैट। उसके ऊपर रोना नहीं है, जो भी हो गया, हाँ पछतावा है, बट वो चीज़ वापस नहीं आ सकती। Regret something that can't be changed. No use crying over spilt milk. No use crying over spilt milk. Bite the bullet. हिम्मत करके मुश्किल काम करना। Bite the bullet. हिम्मत करके मुश्किल काम करना। Face something unpleasant bravely. Face something unpleasant bravely. Example, he bit the bullet and went to the dentist. He bit the bullet and went to the dentist.